the weekend for us, especially because we are here in Hyderabad and we support the Sunrisers. But yes, Stark versus Cummins, the two most expensive buys in the IPL. Will we have one of these or both of these or none of these in our fantasy teams? We'll find out now shortly. Faz will be joining me as well as we both pick our teams. And I don't know how we're not going to make this unbiased, but it looks like we're all going to attack Sunrisers players. First of all, how are you doing? All good? All good, all good. अभी अच्छा दिल्ली की इनिंग्स देख के आए अपन. अभिषेक पुरल वहाँ पे मार दिया. So I think that was a good cameo from him. But yeah, I mean 6 प्लेयर अपन सनराइजर्स ले सकते तो I will definitely try and do that. But नहीं, कलकत्ता में भी काफी हद तक का टैलेंट है यार. Like beyond bounds, Kolkata is very talented. They have a good balance in there, and they have big hitters like Andre Russell है, Rinku Singh है. So I'm pretty sure you can't pass these guys. But हैदराबाद कोलकाता लास्ट टाइम अराउंड हैरी ब्रूक थे 100 मारे थे ईडन गार्डन्स में. ये टाइम तो नहीं है, बट अब आपके तरफ से सब पिक शुरू करते हैं. Who do you think is going to start in your team? My first pick is Travis Head. Straight out of the bank, straight out of the World Cup. Again, I'll be surprised if he doesn't start. There's a possibility that he doesn't if you want to play Glenn Phillips, but it's very, I think right now, they've invested the money in him. He's had a good World Cup. Also, उसकी T20 form देख लो आप, he's killing it. His strike rate is like between 160 to 180. न्यूजीलैंड के सीरीज में भी जहाँ वहाँ पे भी अच्छी बैटिंग करा उन्हें, and overall he's done really well I think in T20 cricket too. So look, we've seen the pressure of the price tag. It's not necessarily he's going to have that orange cap or he's going to have the best season, but I'm going to back him, man, as the opener, as my first pick. I mean, good shot. Obviously, Travis Head World Cup जिताने वाला player है, तो obviously a lot of people will be interested. हैदराबाद यहाँ तो बिल्कुल उसको अलग लेवल पे लेके चलेंगे. अगर आज उन्हें कुछ 100 मार दिया तो 100%. I am going to go with Venkatesh Iyer. I think as an opener, Venkatesh Iyer might open, right? Like, if I'm not wrong. Yeah, he should. Manula Gurpas. So Venkatesh Iyer is a very decent pick because he bowls as well a bit. He is fantastic with the bat. Last time around, he was one who कोलकाता को जो कैरी कर रहे थे, जो कोलकाता को टेक्निकली का लंबे लंबे छक्के मार सकने की उनमें he has the ability. तो I think Venkatesh Iyer is a solid pick for me right now. Venkatesh Iyer, I think that's a very good pick, man. I'm also seriously considering him. I don't know whose partner is going to be, Salt or Gurbaz, but that's I think that left hand, right hand will work. I'll go with the other Iyer, Shreyas Iyer. I think he's my second pick. Coming back from injury, he missed the whole season last year. So I think he's raring to go. He needs a point to prove. Also, I'm sure he missed playing the IPL. He missed leading the side. He's captain also. And if you see his performance as captain for Delhi Capitals and then for KKR, it's been pretty decent. I don't think he's done that bad of a job. He was actually unlucky to be taken off the Delhi Capitals captaincy, although he made them reach the playoffs and the finals. तो आई थिंक he'll be ready to go. उन्हें मिस कर रहा भाई, कब से उन्हें खेला नहीं, तो वो कीरा है कि भाई आके आईपीएल खेलना है मेरे को, तो I'll go with Shreyas Iyer. I am going to go now with the Sunrisers guy because बहुत टाइम हो गया Sunrisers को लेकर आने की. सेकंड पिक ही थी मेरा. I think I'm going to go with Mr. Aiden Markram. Aiden Markram is going to probably have a redemption. You'd start him over Phillips? I will start him over Phillips because Aiden Markram, I mean, yes, both have similar attributes, but Aiden Markram more cemented even in the actual team, right? Like, because what he's already captaincy छूट गया, so I think Sunrisers would not immediately give away his position as well. Like, आप हर चीज़ ले ले रहे थे, it won't like go. And again, Aiden Markram right now, he had a point to prove. Last year उतना उनका बल्ला नहीं चला. Like, at occasions ठीक है, एक आध 50 मार ले रहे थे, but he wasn't consistent. Mr. Markram, and now captaincy जब आपके पास से चले आती है, आप में एक आग रहती है कि भाई मैं बताऊंगा कि मैं भी मारूंगा. Not that he has any पर्सनल कुछ ग्रज वज नहीं लेके चल रहे वो पैट कमिंस के साथ, बट उनका खुद एक एज अ प्लेयर आप की कैप्टनसी छूट गई, थोड़ा बहुत आपको होता है कि नहीं, आई वांट टू प्रूव अ पॉइंट एंड स्टफ. सो आई थिंक एडन मार्करम विल डू दैट. वी सॉ सम फैंटास्टिक कैप्टनसी फ्रॉम इन एन T20 विनिंग इट एंड फील्डिंग दैट वन आर्म कैच मिड ऑन पे. तो आई थिंक एडन मार्करम. एंड वर्ल्ड कप में अगर आपको याद है उसके 2-3 इनिंग्स जो डिस्ट्रक्टिव मार्करम is an excellent player of spin. So you're going to play in Eden Gardens. There's going to be spinners there. You have to play Varun Chakravarti, Sunil Narine. And last time around, अगर आप याद रखो, हैरी ब्रूक जो 100 मारा था, it was because Markram was with him and giving him that ability. That's what I'm saying. Like he can play turn very well. So Markram, my third pick will be another guy who plays spin amazing. He's the best T20 batsman over the last year. I think Henrik Larsson. I just hope uska form nahi chalega because over the last 1.5 years, let's take it
from just before last year's IPL to now, bro, IPL में century मारा उन्हें, उधर America MLC में मारा, 100 में मारा, हर जगह he scored 100, bro. Every league, every tournament, wherever, this guy scored 100, and that too in a T20 game, it's unheard of. So for me, without a shadow of doubt, he was our player of the year last year, MVP, and I hope that this year not only does he contribute, but that other people back him up as well this time around. So next pick में थोड़ा confused हूँ. I think I can ask your help for this, or I mean if people are watching us, they can give us suggestions as to who to pick. But Andre Russell और रिंकू सिंह में थोड़ा मैं डगमगा रहा हूँ, because Andre Russell वो consistency नहीं देता, but I don't want to miss out on that wickets and opportunity. Rinku Singh is a consistent more performer last season, but this season going in, I don't me like he's not been in and around the runs. I'm not taking anything away from it, but Andre Russell will give you that, you know, the fantasy pick if I'm taking bat ball दोनों है उसके साथ. So it's a 50-50 call because Rinku Singh is in the form of his life. He's outstanding. अभी India का आ गया, confidence बहुत है. And against Sunrisers, that game, that Harry Brook game we talked about, उन्हें Nitish Rana actually started a comeback in that game. If you remember, they had a partnership. उन्हें मारा भी, like good set of runs he scored in that game. So he doesn't mind the Sunrisers attack. Now the only thing with both of them is that the position they bat in. What if the top three consume 15 overs? Then will they be able to score those many runs? I'm not sure about that's that. Where Russell is like. So then you can take. I would probably prefer Russell because he bowls too. That's the only reason. मगर Rinku Singh को अगर उन लोग one down भेज दिया या they're 50 for 3 and he comes in, then फिर मैं आपको नहीं सकता. Possibility तो बिल्कुल है वो चीज, but वही है कि भाई आप कौन से direction में देखना चाह रहे हैं. Do you want an all rounder? And I think for the sake of like because ये match to match करेंगे तो I think ये match में if I'm putting my hand on my heart, I'm going to go with Andre Russell because the guy does perform well. That's a very good call. Yeah, I would have done the same thing. Because he performs against. Yeah, he normally मैं उसको हर वक्त मेरी fantasy team में रखता था. The only problem is sometimes I would vice captain him or captain him. I wouldn't always captain him. And उन्हें कभी एक ओवर 5 विकेट ले लेता, एक ओवर में उन्हें 30 भी मार देता. But like I'm saying, it all depends on the position. The batting wise also, I'm not sure how many deliveries that he'll get, but sometimes 12 deliveries is enough for him to get fantasy points. Yeah, 100%. I can hit a 50 in that as well. So your next pick would be I've got 3 players already, so now I need 3 more players, right? So I'm gonna go with. I hope he starts, but I'm gonna go with Washington Sundar. I'm hoping that he gets a bat as well, and with the ball. Picks up few wickets for Washington Sundar. Yeah, the only thing is like worrisome about him is injury prone है थोड़ा. Yeah. थोड़ा उसके problems. I hope he's fit. Like and yeah, like you said, start करेंगा नहीं करेंगा that thing. I'm actually go with Mayank Markande because Markande I feel like he might get a chance because last season around he was very good. But again, like you said, Washington Sundar अगर है, I don't know, but I think Mayank Markande will play. Even Sundar will play unless he is injured. Yeah. So I think Markande is someone that I really enjoyed watching last season for the Sunrisers, and yeah, that's going to be my 4th pick. Yeah, I'll be surprised honestly. There's Abhishek Sharma too, right? Yeah. So he'll play. I mean, I hope that. Let's see. I hope that he plays. I'll go with him. 5th pick, I'll go with what's his name, Varun Chakravarti. Oh, mystery spinner. He's done very well for Kolkata. He's one of the reasons, you know, वो लोग final पहुंचे थे वो time पे. In Eden Gardens, he it does suit him. Again, Kolkata, you saw in the World Cup, it was very spin friendly. I'm expecting that again. You never know. Sometimes in the beginning of the season, you can get those 200 scores. Also, you can have those flat wickets. It's a very quick scoring ground. Lush outfield रहता है, जबरदस्त आप boundaries भी मार सकते हैं. लेकिन if it is a bit slower, everything, Varun Chakravarti is my guy to go. I mean, it's him and Narayan. I wasn't sure you could go either one. Yeah. Narayan will also help you with the bat, but right now I'm going Chakravarti as my 5th. Yeah, fair shout here. Chakravarti will give you wickets if it's a slower track. And वही अब मेरे लिए 2 confusions हैं यहाँ पे. 2 bowlers बहुत प्यारे bowlers हैं ये. एक सनराइजर्स का है भुवनेश्वर कुमार और एक है मिचेल स्टार्क, जो आपको रिटर्न आ रहे हैं आफ्टर एक 8-10 साल 12 साल के बाद IPL में. बट ये साल उनका T20 रिकॉर्ड भी उतना खास नहीं रहा है मिचेल स्टार्क का. एंड भुवनेश्वर कुमार का डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया है. तो मैं थोड़ा इफी हूँ कि किसको लियो. आई थिंक मैं एट द एंड ऑफ द डे आई विल गो विद द सनराइजर्स प्लेस. आई गो विद भुवनेश्वर कुमार. दो आई स्टिल थिंक मिचेल स्टार्क माइट पिक अप अ लॉट ऑफ विकेट, बट भुवनेश्वर कुमार द एबिलिटी टू मूव द बॉल आई थिंक वाज फैंटास्टिक है उसकी. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम गोना गो विद Bhuvaneshwar Kumar. I think like again with Stark, right? If he's born to the foreign players, I think they might attack him. The Indian players, he might have a better chance. I don't know. That's why I just feel that उसके pace के साथ
ठाक बोल Yeah, के Markram मार भी and Klaasen तो मार सकते उसको, but he's a guy, he can pick up wicket, he's like a proper wicket taker, so I mean it could be hot or cold, it's anybody's guess with Mitchell बिल्कुल. Starc. My sixth pick, who else is there, man? I wanted to go उमरान मलिक है आपके पास अभी, you no, know. I'll go with Sunil Narayan. I think tried and Oh, trusted. tried and tested, yeah. Again, playing in KKR, he's played 10 साल से खेल रहा, 2 championship है उसके पास. I always think that uska form dipping, but he does somehow pick up wickets. He's not maybe a crazy wicket taker, but now with Gautam Gambhir there, I think maybe his batting role might be also come into the spotlight. Maybe usko, because मेरे को याद है Gambhir के under उसको opening भी दिए थे. Yeah. I'm not saying necessarily he'll open the innings, but he might be promoted here and there. I have a hunch for that, so I'll go with Narayan as my sixth pick. लास्ट पिक तो सुनील नारायण हो गया आपके, एंड आई थिंक लास्ट मेरे रहेंगे शायद पिक कप्तान साहब पैट कमिंस. Paddy is going to be That's a good pick, there because obviously he is the new kid on the block, coming to get the IPL for the Sunrisers, another Australian captain. It's just going to be probably first game vibes, maybe, that actually helps first game haul hota, usually football mein. So I think maybe he might just pick up a couple of wickets in the power play. Yeah, and गुरनूर पाजी हमारे साथ कब एक अरे साल के वाह, बाद आ रहे हैं. कितने बाद बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. हाँ, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दिए, तो आप कितना टाइम से अभी चेंज करे 2-3 दिन पहले, बड़ा बहुत टाइम से आ तो रहे आप हैं. बहुत टाइम से आए नहीं, और आपकी टीम अभी मार दे रही 31 for 0, 2.3 overs धवन, और उन्हें बेयरस्टो ऑफ टू अ फ्लायर chasing 170. It looks like Punjab in a very good position to win this game. तो आपको मुबारक अगर पंजाब जीत गए. अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आई एम अज्यूम आप कर रहे हैं. आज पंत कैसा खेला मैंने नहीं देखा. अभी ठीक कर रहा है, थोड़ा स्ट्रगल करा है ऑब्वियसली इतने टाइम के बाद, फिर भी मैनेज टू गेट. एक लकी बाउंड्री मिल गई थी जो हर्षल पटेल ने कैच छोड़े, बट एक अच्छी ऑफ पे ने ड्राइव मारी. ही वाज अपसेट क्योंकि उनका विकेट हर्षल पटेल थोड़ा रिसीव कर दिया उनको स्लोअर बाउंसर के साथ. आई थिंक यू शुडंट गेट डिसीव्ड बाय दैट, बट हर्षल पटेल के पास है एक बॉल, बट हर्षल पटेल एक्चुअली अच्छे स्पीड मार रहे थे आज. तो मेरे अजीब शॉट था वो थोड़ा. हाँ, तो ही ट्राई टू he couldn't get the control on the thing, and उतनी स्पीड नहीं थी बॉल पे जो उन्होंने अज्यूम करके लगते कि ठाक छिक्का होगा. आई थिंक वो भूल गए कि हर्षल पटेल उनको बॉलिंग डाल रहे थे, राइट. तो मेरे हिसाब से उन्होंने समझे कि शायद रबाड़ा या कोई डाल रहे तो उन्हें ठक बोल के मारेंगे, बट सीधा बैट्समैन या धवन के हाथ में गिरी वो बॉल. तो फिर भी इसके 18 रन मारना, स्टिल वन ऑफ द टॉप 4-5 स्कोरर्स इन दैट थिंग. सो इट्स गुड फॉर ऋषभ पंत. वापसी हो गई. नाउ ही विल बी अ लिटिल बिट, क्या वो फर्स्ट गेम भी स्ट्रेस होता है, थोड़े लोग अच्छा मार के खेलना चाहते हैं, थोड़ा नहीं हो पाता थोड़ों से. एंड ऋषभ पंत लुक लाइक ही कुड हैव गॉट अ बिग स्कोर अगर थोड़ा और टिक के थिंग, बट द शॉट्स वर नॉट कमिंग ऑफ. तो या आई मीन मोर और लेस ठीक ठाक ही खेला. अब शुरुआत है, अभी बहुत लंबा सीजन है. इट्स गुड टू सी हिम रनिंग बिटवीन द विकेट्स. उन्हें टूज भी ले रहा था. दैट मींस ही इज फुली फिट एंड द फॉर्म विल कम. मैन ही हैजंट प्लेड 2 साल से उन्हें क्रिकेट नहीं खेला, तो इट टेक सम टाइम, बट इट्स गुड टू सी हिम एटलीस्ट नॉक अ फ्यू बाउंड्रीज, वर्क सम सिंगल्स. हैप्पी फॉर दैट. तो ये जो फैंटेसी पिक्स हुए सनराइजर्स कलकत्ता के, मेरे ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर, क्लासन, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, फैज के, वेंकटेश अय्यर, एडन मार्करम, रसल, Markande Bhuvi, and last one I can't read my writing. Pat Cummins. Yeah, Pat Cummins is your last pick. और आप लोग भी जो भी ज्वाइन हो रहे आज, पंत कैसा खेल रहा है, शशांक भाई का सवाल था. ऋषभ फिटनेस मस्त करके आता अब धीरे धीरे. हाँ, फिटनेस तो आई थिंक ही इज फैंटास्टिक. शेप में दिख रहे हैं. ही डजंट लुक लाइक ही गेन्ड वेट और लाइक फिट दिख रहे हैं फॉर हिज नेचुरल जैसे वो रहते यूजुअली. एंड वही है भाई, ही केम आउट स्माइलिंग, ही वेंट ऑफ स्माइल, लाइक ही डिडंट गो ऑफ स्माइलिंग, अ लिटिल अपसेट, बट मजा आया उनको देख के पिच पे. एंड या आई मीन पीपल विल नाउ नो कि भाई T20 वर्ल्ड कप में एक और कंटेंडर तो आ ही गया है. श्रेयस शर्मा पूछ रहे ये नया स्टेडियम है. हाउ नया स्टेडियम है, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट हो चुकी है उधर. आई थिंक दे प्लेड रणजी ट्रॉफी एंड सम सॉर्ट ऑफ क्रिकेट देयर. 15-17 गेम्स खेले, लेकिन आईपीएल और इंडिया मैचेस कभी हुए नहीं. तो ये पहली बार आईपीएल का मैच हुआ इधर मुल्लनपुर में. इट इज आई थिंक क्लोज टू मोहाली ओनली. आई मीन इन मोहाली, क्लोज टू द आईएस बिंद्रा. या द तीन स्टेडियम आई थिंक अभी पंजाब में रहे क्लोजनेस में. बट यहाँ पे अभी शिखर धवन तो बोल्ड हो गए ईशांत शर्मा के ईशांत शर्मा के गेंद पे. एंड जॉनी बेयरस्टो इज स्टिल देयर, सो लेट्स सी, दे स्टिल हैव टाइम. 34 for 1 गुड स्टार्ट है भाई.
Yeah, 34 for 1 है और they're a very good start. I think they're going more than 10 runs and over, तो required 8.3 है. देखना हम लोग पड़ेगा. आएंगे प्रीव्यू के लिए हैदराबाद और कोलकाता. या अभी ये मैच आप खत्म जो होने भी दो. जोड़े लाइक करिए यार, लाइक कर दिए तो हम पता है कि आपको काम पसंद आ रहा है. सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप रेगुलरली आ सकते हो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा छोटा दीजिए. स्टेडियम है क्या पूछ रहे हैं? नहीं यार, काफी बड़ा दिखा मेरे को तो, लाइक इट स्प्रेड आउट. मेरे को तो दिखा तो जिस तरीके के मतलब एरियल व्यूज देख रहे हो तो मेरे को तो बहुत स्प्रेड आउट दिखा. तो आई थॉट इट वाज अ बिट ऑफ अ बिग ग्राउंड. हाँ, I mean, if you compare it to maybe the old one, maybe a bit smaller, but देखना पड़ेगा मैं गौर से होता है. लेकिन एक कैपेसिटी इंक्रीज है पिछले वाले से, गुरनूर पाजी बोल रहे हैं. हाँ वही तो, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को तो काफी फैलावा दिखा ग्राउंड जैसा. मैं उतना गौर से देखा नहीं, बट यार आई थिंक इट्स गुड इनफ मैन. एंड अभी तो हम लोग ये मैच खत्म होगा तो फिर से लाइव जुड़ेंगे आपके साथ. गुरनूर पाजी आप भी आ जाओ, श्रेयांश भाई आप भी आ जाओ, जो भी देख रहे हैं हमारे साथ, प्लीज जॉइन अस एंड hit the like button, subscribe button. Yes, and please. we will catch you towards the right after this. अब क्या आधा घंटा 40 मिनट होंगे? नहीं, 1 घंटा तो होगा, I think 1 hour. But the update is 38 for 1. And our update is the fantasy picks. We were looking at me and Fez. You can go rewind and see our picks and make sure you comment as well with your picks. Thank you so much for joining. Catch you very soon.